सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है YZ टेक चैनल के अंदर। जो आज की वीडियो है ना, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाली है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ही कुछ ऐसी थी कि उसको 20K के अंदर रहकर उसको गेमिंग भी करनी थी प्लस एडिटिंग भी करनी थी। Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. जैसा कि आपको बताया, जो हमारे क्लाइंट है वो एक गेमर है, तो उनको कैबिनेट भी RGB वाला चाहिए था। इसलिए हमने इसमें एक ऐसा कैबिनेट यूज़ करा है अंडर बजट वाला, जिसके अंदर दो जो आगे फ़ैन है वो इनटेक करते हैं एयर को, और एक जो पीछे फ़ैन है वो एग्जॉस्ट करता है, और तीनों फैंस के अंदर RGB। तो इसमें आपको एयर वेंटिलेशन के रिलेटेड आपको इसमें कोई भी इशू नहीं देखने को मिलेगा। अभी तो क्लाइंट का बजट 20K था, लेकिन इन फ्यूचर उसको उसका प्रोसेसर अपग्रेड भी करना था। इसलिए हमने इस बिल्ड में जेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला Z310 M2 मदरबोर्ड यूज़ करा है। इसमें आप 6, 7, 8, 9 जनरेशन तक के आप प्रोसेसर ईजिली आप लगा सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि हम ये जो PC बिल्ड कर रहे हैं 20K में, सिर्फ आपको ये CPU होने वाला है, इसमें आपका मॉनिटर इंक्लूड नहीं है। इस बिल्ड के अंदर हमने i5 6 जनरेशन प्रोसेसर का यूज़ करा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक परफॉर्मेंस निकाल के देता है। और जब हमने इस प्रोसेसर को RX 570 के साथ पेयर करा और उसके बाद हमने जब गेमिंग टेस्ट करा, तो इसने GTA 5 में 60+ FPS आराम से निकाल के दिए। तो इस बिल्ड के हम सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करें तो इसके अंदर हमने यूज़ करा है सफायर की तरफ से आने वाला RX 570, जो कि 4GB VRAM के साथ आता है DDR5। इस बिल्ड में हमने क्रूशल की DDR4 8GB रैम स्टिक यूज़ करी है, क्योंकि ये अंडर बजट भी आ रही थी और ये 26 MHz की भी थी। इसमें हमने RVX की NVMe इसलिए यूज़ करी है क्योंकि ये अंडर बजट भी थी और इसकी रीड राइट स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। सो गाइस, ये थी PC की कुछ स्पेसिफिकेशन। PC बिल्ड देखना है, आ जाओ बॉस, दिखा दूंगा। You can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. तो चलिए मैं बताता हूँ आप सभी को, मैंने इस PC बिल्ड में यही सारे कंपोनेंट्स क्यों यूज़ करे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन फ्यूचर क्लाइंट को उसका प्रोसेसर अपग्रेड करना था, इसलिए मैंने जेब्रोनिक्स का मदरबोर्ड यूज़ करा है, जिसके अंदर आप 6, 7, 8, 9 जनरेशन के प्रोसेसर आप इजीली आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस बिल्ड में हमने क्रूशल की DDR4 8GB रैम स्टिक यूज़ करी है, क्योंकि ये अंडर बजट भी आ रही थी और ये 26 MHz की भी थी। इसमें हमने RVX की NVMe इसलिए यूज़ करी है क्योंकि ये अंडर बजट भी थी और इसकी रीड राइट स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। सो गाइज, अगर आपको भी गेमिंग PC बनवाना है तो यहाँ पर डिस्प्ले में आपको नंबर शो रहेंगे, आप इसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और आप गेमिंग PC बनवा सकते हैं। सो गाइज, ये था हमारा 20K का PC बिल्ड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिए, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, तो आप इसको ज्वाइन जरूर करिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। No, man, I still go, 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 go.
और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी